before starting this video, I want to tell you something that if you want to get a free lipstick, then go and check my Instagram page. वहाँ पे मेरे बायो में लिंक है एक, वहाँ पे आप लोग को टैप करना है, मतलब क्लिक करना है. उसके बाद माई क्लैम का एक ऑप्शन दिखेगा आपको. आप लोग को वहाँ पे जाके कुछ नहीं करना है. You just have to fill this survey over there and grab your free lipstick with zero cost. Go and grab your free lipstick. Hey my beautiful people, my lovelies, my beauties, hope you all are doing good. If you're new to my channel, warm welcome to you guys as well. And if you guys watch my video and haven't subscribed yet, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर ही दो. पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए. और लाइक भी ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना. एंड मैं कोशिश कर रही हूँ बैक टू बैक वीडियोस लाने का. एंड ऐसे मैं बहुत महीनों से बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट अ ईयर, ऑलमोस्ट मैनी मंथ्स मैं बोल रही हूँ मैं बैक टू बैक वीडियोस लाने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ, बट वो कुछ नहीं रहा है. बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू. मैं इतना ही डिटैच हो गई थी यूट्यूब से. सो आई एम बैक हियर. सो दिस इज़ द लुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू. How is it? Comment down below. And if you are recreating this look, do tag me on Instagram, Facebook, wherever you feel like. You can even DM me as well. मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करने वाली हूँ. So yes, let's get started with today's tutorial. And सब कुछ प्रोडक्ट का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ रहेगा. So if you guys want, you can go and check it over there. Guys, make sure to check my Instagram profile as well, my Facebook profile as well. And हाँ, check मत करना, follow भी ज़रूर कर देना, okay? And yes, let's get started with the video. So welcome back to my channel after ages. थोड़ा बहुत लाइटिंग में प्रॉब्लम होगा बिकॉज मैं जो स्टैंड में शूट करती हूँ अपना वीडियो, वो उसका फ़ोन होल्डर जो होता है वो टूट गया है. सो मैंने somehow I managed to keep my light in front of me ताकि थोड़ा बहुत फोकस आ सके. सो मैं बहुत जल्दी इसको ठीक करने वाली हूँ. सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, थोड़ा सा फेस में लाइट आए. Okay, so first and foremost I'm going to wear my contact lenses and then I'll catch you. Alright, I'm done wearing my lenses. Next I will be applying a good moisturizer which will keep my skin hydrated, and for that I'm going to use this Ayurvedic Kumkumadi cream. This is a really amazing moisturizer. If you are in search of a good moisturizer, you can go for this. If you want to know this review, अगर आप लोग को ये रिव्यू देखना है, you can check my Instagram page. वहाँ पे आप लोग को इसका full review मिल जाएगा. Next I have used this Oriflame lip balm, Tender Care. This is also a good lip balm. If you are in search of a good lip balm, you can go for this. Okay, so everything needs a good and strong base, so as your eye makeup needs too. So before starting off with my eye makeup or before using my eyeshadow, I will be using this concealer palette by Swiss Beauty. It is a good concealer palette. So I'm taking this shade from this palette and मैं इसको अपने eyelids में यूज़ करने वाली हूँ. एंड देन आई विल बी ब्लेंडिंग इट विद हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर. ओके, मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है. उसके बाद इसको सेट करने के लिए मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने वाली हूँ. एंड सेम स्पंज से ले रही हूँ. उसके बाद जस्ट डैब इट. So you're good to go with your eye makeup. Start with our eye makeup, and for that I'm going to use a gel liner. Please don't use a liquid liner. If you want, you can go with a kajal for your eyelids. So मैं सबसे पहले ये gel liner लेने वाली हूँ, and with this brush मैं इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी एंड थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट लेके अपने eyelids में लगाने वाले हैं, like so. And it doesn't need to be perfect because हम लोग को बाद में blend करना ही है. So थोड़ा थोड़ा we'll take it. I'm applying it all over my lids. Then with the help of a blending brush, we will blend like this. We don't want any harsh edges, इसलिए हम लोग ऐसे ब्लेंड कर रहे हैं. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रांजिशन कलर नहीं लगाया, पर मैं वो भी लगाने वाली हूँ आफ्टर ब्लेंडिंग दिस नाइसली. एंड ब्लेंडिंग इज द की टू अ गुड आई मेकअप एंड योर बेस मेकअप. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अ डार्क ब्लैक आई शेडो. डार्क ब्लैक
ब्लैक आई शेडो द सेम ब्रश, बिकॉज हमें ज़्यादा ब्रश गंदा नहीं करना है. सो डस्टिंग ऑफ द एक्सेस and just blending it with a light hand. So as I'm done blending my black eyeshadow, next I'm going to take a beautiful brown color, light brown color, and I will be just blending it with the black color. In a circular motion, I'm just blending it out. So I'm done with my both eyes. उसके बाद मैं excess product dust off करने वाली हूँ, मतलब fallouts, not excess product. Fallouts में with the help of a brush or a tissue paper, wet wipe, कुछ भी हो, just dust it off. And you're good to go with your base makeup. Alright, so the main thing before starting your base makeup is a good primer, and for that I'm going to use this Swiss Beauty का Real Makeup Base Primer with highlighting effect in it. So ये बहुत ही highlighting effect देता है आपके फेस को. So थोड़ा सा प्रोडक्ट blending it all over my face. So I'm done applying my primer. उसके बाद मुझे अपने डार्क सर्कल्स को कलर करेक्ट करना है, and for that I'm going to use this LA Girl और La Girl Pro concealer. ये है orange shade and see the condition. हमेशा ऐसे हो जाता है. So let me fix this first. So ये तो फिक्स हो गया. So इसे हम अपने डार्क सर्कल्स में यूज़ करने वाले हैं. Okay, so I'm blending it with this छोटा सा beauty blender. Just dab it. Don't drag it. Just dab it and don't drag it. Alright, so I'm done blending my color corrector. Next I'm going to use this Color Essence HD Makeup Pan Stick and foundation. This is a good foundation. With the help of a brush, I'm going to blend it out. Okay, so next I'm going to use a concealer, and this is by the same brand, La Girl Pro Concealer. Okay, next I'm going to do थोड़ा बहुत बेकिंग, केक बेकिंग नहीं, फेस पे. So उसके लिए मैं लैक्मे का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, and I'm just applying loads and loads of powder under my eyes, mouth area, because these areas tend to crease a lot. अभी विंटर्स है तो क्रीज नहीं होगा. Still you should apply. Okay, so I'm done with my baking. So हम लोग अपने lower eye का makeup complete करेंगे, and for that I'm using a kajal. Don't worry if it comes out, because we will be smoking it out. And with the angled brush, we will be blending it very nicely. Okay, the same process, हमें थोड़ा सा brown eyeshadow लेना है with the same brush, and I'm blending it very nicely and very gently. So with the same compact powder, मैं इसको ऐसे करके dusting off the excess, and I'm dusting off my baking which I have done on my face. Okay, with a flat brush हम लोग golden eyeshadow ले रहे हैं, and लेने के बाद
we are highlighting, I'm highlighting my inner corners. Okay, so I'll do a little bit of contouring, and I'm using NY Base contour stick in the shade brown. Okay, so मैंने ऑर्डर किया है, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड. रिवी थोड़ा बहुत है, उससे मैं नोज कंटूर करूँगी एंड फेस में आई डू लिटिल बिट ब्रॉन्जिंग. Of a brush, I'm going to blend it out. Okay, I'm done with my contouring. उसके बाद मैं Swiss Beauty का bronzer लेने वाली हूँ and I'm using it when I want my face to look chiseled. Alright, I'm done with my bronzing. After that, I'm going to use this Deborah Milano blush. Okay, so we are left with our brows. First, we will brush it, and next, I'm going to use this brown eyebrow gel. I'm just filling my gaps, that's it. And you're good to go. From this glitter palette by Swiss Beauty, I'm going to take this shade and इसे मैं अपने eyelids पे use करने वाली हूँ. Just little bit of shimmer. Next, I'm taking this Swiss Beauty's golden liquid eyeshadow, and I'm applying it on my inner corners. So I think I have covered each and everything. उसके बाद मैं NYX का setting spray use करने वाली हूँ. It's almost done. I think I finished it already. So the second last step of our makeup is highlighter. So मैं यहाँ पे golden shade ले रही हूँ from the same palette जो मैंने bronzing के लिए use किया था, and I'm highlighting it all over my highest point. So the last step is lipstick. So I'm using this nude shade. This is from the brand My Glam. So guys, if you want to get your free lipstick as well, this is a free lipstick of mine. So if you want to get yours, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को Instagram के लिंक में, मतलब मेरे बायो के लिंक में आप लोग को क्लिक करना है. वहाँ पे आप लोगों को माई ग्लैम का ऑप्शन दिख जाएगा, और आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है. आप लोग को सिर्फ 5 मिनट्स आपको एक सर्वे फिलअप करने के लिए देना है, एंड उसके बाद ग्रैब योर फ्री लिपस्टिक एज वेल. इट्स टोटली फ्री. आप लोग को 1 रुपी भी नहीं देना पड़ेगा टू गेट दिस लिपस्टिक. सो गो एंड ग्रैब योर्स. सो ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूड लिपस्टिक मैंने ये ब्राउन लिपस्टिक यूज़ किया है, जो कि मिक्स एंड मैच होने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है. सो आई एम गेट रेडी एंड देन आई विल कैच यू. Alright guys, this is the end of today's video. Hope you guys enjoyed watching this video, my deep intense black smoky eye tutorial with this Indian tint, hint, whatever it may be. So if you guys want, you can wear this look with your western outfit as well. So probably suit करने वाला है. If you guys want, you can change the lipstick as well. It's all about creativity. आप लोग कुछ भी करें मेकअप के साथ, it's creativity. That's it. So I hope you guys enjoyed this tutorial. Please do like, share, comment, and yes, subscribe to my channel and hit the bell icon. It would do the infinite world to me. So I'll see you guys on my next video. Till then, take care, stay safe, stay at home. I love you all, my beautiful lovelies.